A very good morning to all of you. Welcome back to the channel. So here we are starting with the analysis video for 9th of September 2023. So B20 India recommendations, ये जो advertisement page है बहुत important हो जाता है. आप यहाँ से basically जो सब headings हैं इनको उठा सकते हो. You can write these in your answers. And सब points भी important हो जाते हैं. Like यहाँ पे अगर हम बात करें financing for the global economic recovery, तो यहाँ पे global SDG acceleration fund important है. Capacity building for the domestic financial sectors. फॉर एसडीजी फाइनेंसिंग, मतलब यहाँ पे बिल्कुल माइक्रो पॉइंट्स की बात की जा रही है. इंप्रूविंग द एमएसएमई एक्सेस टू द फाइनेंस एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सो इन अ वे आप इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो. ईएसजी इन बिजनेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. इंक्लूसिव जीवीसीज फॉर द रेजिलेंट ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन की आप बात करोगे. फ्यूचर ऑफ वर्क, स्किलिंग एंड मोबिलिटी, अफ्रीकन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अफ्रीकन यूनियन is going to be member of G20. देन यहाँ पे जो इनवाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगेन इनके बारे में भी आपको पता होना इम्पोर्टेंट है. लाइक यू कैन सर्च अबाउट एडीबी, आईएलओ, यूनाइटेड नेशंस, एंड देन डब्ल्यूटीओ, ओएमसी, वर्ल्ड बैंक ग्रुप आपको पता होना इम्पोर्टेंट है. सीडीआरआई, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, देन दिस इज अफ्रीकन यूनियन डेवलपमेंट एजेंसी. सो इन सब के बारे में आप सर्च कर सकते हो. So Modi and Biden, they welcome the progress in the defense ties. So India-US relationship, one of the very potential topics. We talk about international relations. उसमें भी in micro details आपको पता होना चाहिए कि कैसे हमारी जो relationship है वो evolve हुई है. And right now हमारे main focus areas कहाँ हैं, कहाँ पे हमारे problem areas हैं, कहाँ पे again we face the threats, और कहाँ पे हम improve कर सकते हैं. So India-US friendship, they will continue to play great role in furthering the global good. And issues की बात करें तो WTO dispute settlement यहाँ पे एक challenging area है. And joint statement highlights deals on jet engines and armed drones. And WTO dispute settlement पे भी again joint statement में mention किया गया है. So you can see कि role of civic agencies भी कितना important है जब हम G20 summit की again preparations की बात करते हैं. तो again they have worked in a cooperative manner, and they started the work over 6 months ago with several agencies like PWD, MCD, NDMC, working in tandem to spruce up the city for the summit. And 40 key stretches को revamp किया गया है. MCD, it has put up art installations. So कौन सी आर्ट इंस्टॉलेशंस इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंस्टॉल की गई है, वो आप सर्च करोगे. उसके अलावा स्कल्पचर्स इंस्टॉल किए गए हैं, फाउंटेन्स इंस्टॉल किए गए हैं. सो अगर हम बात करें सैंडस्टोन sculptures की, तो elephants and horses, they have been installed, lions and panthers made of black marble to greet the delegates in central Delhi. They have installed. तो black marble again किस टाइप का स्टोन है ये आपको पता होना चाहिए, इंडिया में कहाँ पे मिलता है. इसके अलावा when we talk about the G20 logo with the theme Vasudhaiv Kutumbakam, that is also placed at several stretches. And ये जो हम अगेन प्रिंसिपल की बात करें वसुदेव कुटुंबकम, तो इसका सोर्स कहाँ से आता है वो आपको पता होना इम्पोर्टेंट है. अगेन आपको बेसिकली बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए. दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस फ्रॉम द एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव. Coming to the editorial page, so let's see the important topics of the day.
Talking about Eastern hedge, तो India needs to build closer ties with ASEAN, चाहे आप इकोनॉमिक रीजंस की बात करो या स्ट्रेटेजिक रीजंस की. सो ईस्ट एशिया समिट, आसियान समिट अभी हुआ है, सो दैट्स व्हाई इट इज इन न्यूज. एंड 12 पॉइंट एजेंडा जो हम कल बात कर रहे थे, दैट इज बीन रिलीज्ड बाय इंडिया. तो उसमें अगेन 12 पॉइंट्स क्या है, दैट इज इम्पोर्टेंट. मेंबरशिप ऑफ आसियान, दैट इज इम्पोर्टेंट. एंड वी टॉक अबाउट इंडिया की भी नॉर्थ ईस्ट सेक्टर जो है इंडिया में, वहां पे भी अगेन कनेक्टिविटी विद साउथ ईस्ट एशिया, वो एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हो सकती है. एंड अगेन जब हम डेवलपमेंट की भी बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, तो वो भी वी कैन बेसिकली एक्सेलरेट द प्रोसेस ओवर देयर, चाहे आप अब बात करें इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी की एंड जो ट्रेड एंड डेवलपमेंट हो सकता है. एंड यहाँ पे अगेन ग्लोबल ट्रेड की बात की जा रही है. तो व्हाट आर द चैलेंजेस टू ग्लोबल ट्रेड, आपको सब पॉइंट्स पता होना इम्पोर्टेंट है. चैलेंजेस टू ग्लोबल ट्रेड इन द सेंस साउथ चाइना सी की अगर आप बात करो तो ग्रोइंग असर्टिवनेस ऑफ चाइना, कुछ जो कीवर्ड्स हैं अगेन नॉट फॉलोइंग द ग्लोबल लॉ एंड ऑर्डर या फिर international order, such terms you can use in your answers. And then also on the onset of El Nino also, which is historically associated with a disruptive weather, we see कि उसकी वजह से भी ग्लोबल ट्रेड के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पॉसिबल है. एंड बिकॉज इम्पैक्ट कैसे पॉसिबल है, अगर सप्लाई कम होगा, कल्टीवेशन ही चीजों का जो हार्वेस्ट है उसमें ही हमें लेस प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी, लेस आउटपुट रिकॉर्ड होगा. तो अगेन ट्रेड नेचुरली कम हो जाएगा उसकी वजह से. और जो इकोनॉमिक चैलेंजेस इमर्ज हो रहे हैं ऑलरेडी, दैट इज हाई इन्फ्लेशन, एंड ये हमें ग्लोबली देखने को मिल रहा है. And साथ ही साथ we are seeing the countries they are moving towards protectionism, protectionist policies लेके आ रहे हैं in their trade policies. So again अब उससे हम कैसे डील कर सकते हैं, that is one of the challenges. साउथ चाइना सी की हम बात कर चुके हैं. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, स्पेसिफिकली इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में जो हमने पास्ट में साइन करे हैं, उन्होंने इंडिया को टू व्हाट एक्सटेंट हेल्प किया है in terms of increasing our exports, या आप बात करो increasing the share of exports in GDP. and right now हम इतना फोकस क्यों कर रहे हैं on FTA, अगर पास में FTAs ने इतना ज्यादा इंडिया को हेल्प नहीं किया है तो how the FTAs that we are currently focusing upon, how they are different from the previous ones. एंड देन इसमें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक या सब टॉपिक की जब हम बात करते हैं ग्लोबल ट्रेड की, कि ग्लोबली वी आर सीइंग दिस फिनोमेनन ऑफ रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस या ओवर डिपेंडेंस अपॉन चाइना. So countries they are adopting such policies so as to diversify their dependence upon different markets, different countries, and not just be limited to China. Because again this is one of the important lessons from COVID-19 that countries have got to learn, and they're acting upon this. So you can see foreign dignitaries they visited India yesterday. They've been arriving in India for the G20 summit. And Ukraine remains a sticking point. जब हम joint declaration की बात करते हैं, न्यू दिल्ली declaration after the summit इसको रिलीज किया जाएगा. एंड इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पहले, कि मेन फोकस एरिया एजेंडा पे क्या क्या चीजें रहने वाली हैं, क्या आउटकम्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो यूएन सेक्रेटरी जनरल का कहना ये है कि जो यूक्रेन वॉर है, अभी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इमीडिएट फ्यूचर में इट विल एंड. तो ये कंसर्न है कि हाउ आर वी गोइंग टू मेक श्योर कि वो जल्दी से जल्दी इट कम्स टू एन एंड.
एंड आगे क्या फिर एक्शंस लिए जाने चाहिए जब हम बात करते हैं रिकंस्ट्रक्शन रीडेवलपमेंट की। तो हाउ कंट्रीज या मल्टी, जब हम बात करते हैं कि ग्लोबल फाइनेंशियल बॉडी जो है या मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स की हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं, तो वो कैसे अगेन कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू दिस कॉज। एंड ग्लोबल साउथ, अगेन ये सारे जो टॉपिक्स मेन टॉपिक्स है 3 से 4 days के बीच में बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, तो यू नीड टू टेक to note them down at one place, and then accordingly you need to think more about those relevant topics. African Union chief, so he says कि we have a lot to bring to the G20 table. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। सो हम बात करें वर्ल्ड हैज टू स्टेप इन, जब बात करते हैं अफ्रीकन डेवलपमेंट की। अफ्रीका बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, चाहे आप ड्रॉट्स की बात करें, कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें, स्पेसिफिकली वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज जो है वहाँ पे हमने ऑफ लेट देखा है कि जो मिलिट्री कू है वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, चाहे नाइजर की बात करो, गैबॉन की बात करो। सो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स, जो मिलिट्री कू हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, so again, we need to find a lasting solution to that. Economic issues हैं Africa में that needs to be dealt with. Main priority जो है that is Africa wants to achieve industrialization. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा potential exist करता है। जब हम बात करते हैं richness in the natural resources, so how we can utilize that in terms of furthering industrialization in Africa with the help and with the support of different countries and different international bodies. Then apart from this, इन्वेस्टमेंट इन अफ्रीका अगेन बहुत ज्यादा पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हेन वी टॉक अबाउट द वॉर एंड द शॉर्टेज, सो द अफ्रीकन यूनियन चीफ का कहना ये है कि अफ्रीकन यूनियन हैज बीन डिस्कसिंग वेज कि कैसे जो इम्पैक्ट्स हुआ यूक्रेन वॉर के बाद उसके साथ वो कैसे डील करें इन टर्म्स ऑफ जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में शॉर्टेज है, फर्टिलाइजर्स में जो शॉर्टेज देखने को मिल रही है। And this is not just again relevant to Africa, globally ये impact देखा गया है जब हम यूक्रेन वॉर की बात कर रहे हैं। एंड राइस एक्सपोर्ट बैन किया गया है अगेन इंडिया के द्वारा, तो अगेन दैट इज नॉट अ सस्टेनेबल सोल्यूशन गिवन जो भी ग्लोबल सिचुएशन है। सो डोमेस्टिक इंटरेस्ट आर प्रायोरिटी, बट एट द सेम टाइम वी कांट बी जस्ट टू हार्श विद अगेन ग्लोबल लेवल की जब हम बात करते हैं तो। Then Philippines condemns the illegal actions by the Chinese boats in South China Sea. तो मैप के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो अगेन ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड 9 डैश लाइन आपको पता होना चाहिए देन कौन सी कंट्रीज, अगेन इशू जो रिलेटेड है साउथ चाइना सी में स्पेसिफिकली, which all countries are involved in this. And location of Philippines, you need to know about Micronesia, कौन सी countries का part है, and important islands जो located है, that also becomes important. Suppose यहाँ इस आर्टिकल में अगर आप देखो कि हेनन आइलैंड की बात की गई है, it has been mentioned, so you need to just spot it on the map as well. So even if Russia is absent, India की जो leadership of G20 that remains effective. So Janet Yellen का कहना ये है कि जो conflict है यूक्रेन में, that is the biggest deterrent to the global growth. And price cap on the Russian oil, that is still working, ये मानना है उनका. And she is praised about the host, that is India. So says India's push to scale up the funding for the multilateral development banks gets poor response because countries, they are not sure about कि again कौन सी country को कितना पे करना चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा confusion है, we are not having so much clarity. So it's important to bolster the multilateral development banks. And सो ऑफ लेट अभी जो लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें डिसाइड किया गया था कि जो इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो बैंक्स को मेंटेन करना पड़ेगा, बट नाउ द अपडेट इज कि आरबीआई ने डिसाइड किया है इट विल बी डिसकंटिन्यूइंग विद दिस इन अ फेज्ड मैनर। तो आरबीआई डिसाइडेड जो इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा प्रॉपर फेज मैनर में। ये अगेन नीजर
रिएक्शन नहीं है। सो जो मेजर लिया गया था दैट वाज इंटेंडेड कि जो सरप्लस लिक्विडिटी है हम उसको अब्सॉर्ब कर ले, सो दैट इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल करने में, रेगुलेट करने में ये स्टेप थोड़ा हेल्प कर सके। सो बेस्ड ऑन एन असेसमेंट जो किया गया बाय द आरबीआई ऑफ द करंट एंड द इवॉल्विंग लिक्विडिटी कंडीशंस, इट इज डिसाइडेड कि जो अमाउंट इम्पाउंड किया जाएगा अंडर द इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो वुड बी रिलीज्ड इन स्टेजेस, सो दैट जो सिस्टम की लिक्विडिटी है इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू सडन शॉक्स एंड मनी मार्केट फंक्शन इन एन ऑर्डरली मैनर। सो अगेन सडनली चीजें ना एकदम से चेंज हो जाए, क्योंकि अगेन उसके जो रेपरकशंस हो सकते हैं दे कैन बी वेरी हार्श टू डील विद एंड वेरी डिफिकल्ट टू डील विद। तो और currently we are dealing with inflation, we are facing that, we are looking into कि कैसे उसको हम reduce कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर और नए challenges emerge होंगे तो situation और थोड़ा difficult and challenging हो जाएगी। तो that's why RBI has decided कि they'll be discontinuing with the incremental cash reserve ratio. सो फॉरेक्स रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो फर्स्टली सबसे पहले के माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि कंपोनेंट्स क्या है फॉरेक्स रिजर्व्स के। देन उसके अलावा आपको पास्ट 5 इयर्स का ट्रेंड भी पता होना चाहिए इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स का। एंड राइट नाउ वी आर सीइंग कि हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व है दे हैव सीन अ जंप ऑफ अराउंड $4 billion एंड द टोटल इज नाउ एट 598 या बोल सकते हो $599 billion। सो यू कैन सी कि ओवर रिलायंस ऑन चाइना के ऊपर अगेन कैसे स्ट्रेटेजिकली चीजें चेंज हो सकती है, क्योंकि पावर जो अल्टीमेटली पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ चाइना, क्योंकि चाइना का जो डिसीजन रहेगा ग्लोबली उसका इम्पैक्ट देखा जाएगा। अगर चाइना के ऊपर हम इतना डिपेंडेंट है तो अभी इस केस में वी आर सीइंग द एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट्स जो है चाइना ने उनको रिड्यूस कर दिया है, एंड जिसकी वजह से इंडिया में अगेन कंसर्न्स रेज हो गए हैं, बिकॉज अगर फर्टिलाइजर शॉर्टेज होगा, ऑलरेडी इन्फ्लेशन बहुत बड़ा चैलेंज है, फर्टिलाइजर शॉर्टेज होगा तो फर्टिलाइजर प्राइसेस भी इंक्रीज होंगे, फार्मर्स के लिए जो इनपुट कॉस्ट है वो इंक्रीज होगी, फार्मर्स की अगेन जब हम इनकम कैपेसिटी की बात करते हैं तो ऑलरेडी वहां पे भी हमको चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये पूरे सिनेरियो में कैसे चीजें कनेक्टेड हैं एंड वो आपको समझना इम्पोर्टेंट है। और जब हम बात कर रहे हैं ओवर रिलायंस ऑन चाइना तो ये एक अलग टॉपिक हो जाता है। सो एक एग्जाम्पल इसका ये फर्टिलाइजर के ऊपर जो डिपेंडेंस है वहां पे हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सो इंडिया ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं 30% ऑफ जो यूरिया है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एंड चाइना इसका सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर है। So you can say me the reigning queen of the chess show. So she is a Chinese grandmaster. So उनका क्या कहना है अगेन जब हम स्पोर्ट्स पर्सन्स की बात करते हैं तो उनका क्या पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स लाइफ या टुवर्ड्स देयर गेम, तो वो हमारे लिए समझना इम्पोर्टेंट हो जाता है। दैट कैन obviously really help us in the examination also during our preparation stage. She has to say कि while I play I do not think about winning or losing, I just focus on my chess. So something that is again right now आप जिस चीज के बारे में सोचोगे you will think about winning or losing, तो जहाँ पे आपका मेन फोकस होना चाहिए you are not focusing 100% over that thing. So she says कि I just focus on my chess. Coming to Financial Express. So आज भी अगेन सारी चीजें ऑलमोस्ट मैक्सिमम चीजें G20 समिट के अराउंड है। MDP रिफॉर्म्स एक इम्पोर्टेंट एजेंडा है। देन इंडिया यूएस जो बायलेटरल टॉक्स हुई है वहाँ पे टेक्नोलॉजी और डेमोक्रेसी के ऊपर डिस्कशंस हुई हैं। इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो विड्रॉल के बारे में हमने देख लिया है एंड क्यों विड्रॉल किया गया, रीजन क्या है, दैट आल्सो वी हैव अंडरस्टूड।
देन इंडिया चाइना रिलेशनशिप भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा चैलेंजेस, तो आपको ये सब कॉमन टॉपिक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। जिन साइडलाइंस में अगर हम कवर करें कल्चर कॉरिडोर, सो डिजिटल म्यूजियम एट भारत मंडपम वो सेलिब्रेट करेगा शेयर्ड हेरिटेज ऑफ द G20 मेंबर्स एंड आइडियाज टू फैसिलिटेट के जो डाइवर्स कल्चरल एक्सप्रेशंस हैं फॉर नॉलेज शेयरिंग, इंक्लूसिविटी एंड इक्वालिटी एंड फॉर फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ शेयर्ड आइडेंटिटी। तो यहाँ पे सारे मल्टीपल पॉइंट्स इस एरिया में इंक्लूडेड हैं। डिजिटल इंडिया का एक्सपीरियंस अगर हम शेयर करें तो दैट वुड बी आल्सो शेयर्ड एंड इट वुड बी ऑन द डिस्प्ले। पावर ऑफ टेक्नोलॉजी बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय इंडिया, एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट हैंड पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। सो हमारे इंडिया में जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं द डिजिटल स्फेयर, सो दैट इंक्लूड्स यूपीआई, आधार, डिजी लॉकर, ओएनडीसी, ई संजीवनी, दीक्षा, भाषिनी एंड आस्क गीता। देन आरबीआई इनोवेशन पवेलियन, यहाँ पे अगेन जो डिस्प्ले पे होगा दैट वुड बी द कटिंग एज फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, शोकेसिंग कि कितना उनमें पोटेंशियल है टू रेवोल्यूशनाइज द फाइनेंशियल लैंडस्केप। सो यहाँ पे एग्जांपल्स आप बात कर सकते हो, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी, पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, यूपीआई वन वर्ल्ड, रुपे ऑन द गो एंड क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट्स थ्रू भारत बिल। देन पेमेंट सिस्टम सेंटर में यहाँ पे क्या चीजें डिस्प्ले पे होगी, सो विल बी here delegates, they will be onboarded on UPI One World. So it is designed for inbound foreign travelers जिनके पास बैंक अकाउंट्स नहीं है इंडिया में, सो वो उनको हेल्प कर सकते हैं इन डूइंग हेसल फ्री पेमेंट्स ड्यूरिंग देयर स्टे एंड उनके जो वॉलेट्स है दे वुड बी प्री फंडेड विद ₹2000। आर्ट गैलरीज अगेन, यहाँ पे नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में विल बी सीइंग शोकेसिंग आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम म्यूजियम्स इन चेन्नई, कोलकाता एंड चंडीगढ़। अगेन इंडिया बांग्लादेश टाइज में भी कुछ चैलेंजेस जो हमें देखने को मिल रहे हैं, विल चार्ट न्यू पाथ इन इंक्लूसिव ग्रोथ। सो यहाँ पे अगर हम देखें और द इम्पोर्टेंट एजेंडा, सो एक्सेलरेटिंग द प्रोग्रेस इन एसडीजी, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ इन द वर्ल्ड एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एसडीजीज अगेन जो फंडिंग रिक्वायरमेंट है दैट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट एजेंडा। क्लाइमेट फाइनेंस का जो गोल, India is pushing for ambitious, transparent, trackable, new collective quantified goal for climate finance in 2024. So here the amount is $100 billion a year. जो again this was a commitment by the developed world and इसको fulfill नहीं किया गया। So futuristic sectors को priority दी जा रही है जब हम बात करते हैं technological transformation, digital public infrastructure. So ये keywords हैं सभी। कीवर्ड्स पे ऑब्वियसली अटेंशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फूड सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, मिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे स्पेसिफिकली यूक्रेन वॉर के बाद ये चीजें और इम्पोर्टेंट हो गई है क्योंकि हमें इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है उसके बाद। सो दैट इज इट has become a priority at the global level. So developing sustainable, scalable, inclusive technologies and practices and innovations so that हम climate change को address कर सके, mitigate कर सके उसके effects, उसको adapt कर सके, and then biodiversity loss के साथ हम कैसे deal करने वाले हैं, how we are going to prevent it and reduce it, and then one health approach, smart approaches, climate smart approach, digitization of the agriculture sector, increasing investment from the public and private sector. So ये और चीजें जो हम कर सकते हैं, and definitely millets is a part of it. Agriculture market information system एक inter-agency platform है जो enhance करेगा food market transparency and policy response for the food security. So this was launched following the global spike in the food prices during 2008 and 2010. Then green energy transition एक important agenda है. Apart from this,
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड बैंक लॉर्ड्स इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैम ट्रिनिटी, आधार की आप बात करेंगे। इसके अलावा डीबीटी की बात कर सकते हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो किए गए। ग्राउंड पिकिंग मेजर्स इंडिया ने लिए जब हम बात करते हैं डीपीआई की। सो इंक्लूसिव फाइनेंस में जो रोल रहा है, that is also important achievement we can see. So in just 6 years of DPI, what India has achieved, it would have taken around 5 decades. तो जो हम 50 years में achieve करते हैं वो हमने 6 years में achieve कर लिया. So that's a great achievement for us. Financial inclusion rate जो increase हुआ, जो growth देखने को मिली from 25% 2008 में, and right now we are at 80% of the adults in 6 years. The journey shortened up by 47 years. So this is only possible because of the digital public infrastructure जिसको leverage किया गया. Coming to Indian Express newspaper, so ये advertisements already हम cover कर चुके हैं. इसमें से जो हमारे लिए important चीज है, this we've already seen. Again सब जगह G20 summit, ये सब हम cover कर चुके हैं. The time to act is now. So here अगर आप कुछ points निकाल सकते हो तो this is again specific to Schneider Electric. So यहाँ पे they're celebrating 60 years their anniversary. So यहाँ पे अगर उन्होंने जो steps लिए, next generation automation solution software, so sustainability and energy consulting, energy management solutions, they've offered digital and field services, eco-structure, IoT suite, Internet of Things, one earth, one family and one future. So यहाँ पे फर्दर आप थोड़ा सोच सकते हो, इनको थोड़े माइक्रो पॉइंट्स और क्या पॉसिबल हैं. इंडिया ऑस्ट्रेलिया पार्टनरशिप, अगेन G20 समिट की वजह से यू कैन सी इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं. सो इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट सीक्स टू इंक्रीज बायलैटरल ट्रेड टू अराउंड 45 से 50 बिलियन डॉलर्स तक हमारा टारगेट है बाय 2035. देन जॉब सेक्टर में क्रिएटिंग 1 मिलियन जॉब्स, इंक्रीजिंग इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू ऑस्ट्रेलिया बाय 10 बिलियन डॉलर्स. So we share highly complementary trade between India and Australia, and definitely India is a very important country जब हम Indo-Pacific region की बात करते हैं. क्वालिटी एजुकेशन, अगेन यहाँ पे भी जो डीकन यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया की, दे वुड बी सेटिंग अप देयर कैंपस इन इंडिया. सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी जो इंडिया में अपना कैंपस सेटअप करने वाले हैं. दिस इज अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. सो हायर एजुकेशन में स्पेसिफिकली अभी तक हमने ऐसा कुछ इंडिया में होते हुए नहीं देखा था. सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड इन दिस डायरेक्शन एज वेल, एंड उसमें ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वन जो इंडिया में आने वाली है. देन इंडिया एंड ब्राजील, यहाँ पे फुल डेडिकेटेड पेजेस हैं जब हम बात करते हैं हाउ वी हैव शेयर द रिलेशनशिप, हाउ वी आर प्रोग्रेसिंग फॉरवर्ड, कौन से एरियाज में हम कोऑपरेट कर रहे हैं. इंडिया ब्राजील की बात करें तो डिफेंस कोऑपरेशन, देन अगेन ग्रीन एनर्जी में वी आर कोऑपरेटिंग, नेट जीरो एमिशंस बाय 2050 इज द टारगेट. तो अगेन यहाँ पे how we can share our experiences with each other, that has become important. एंड अगेन ब्राजील ग्लोबल ब्रेड बास्केट भी है. जब हम बात करते हैं मिल्क प्रोडक्शन में तो वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ मिल्क. एंड Brazilian government has been proactively funding innovation also agriculture sector में. How they are again moving forward, यहाँ पे इंडिया को बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकती हैं from Brazil.
So again, key phrase is human-centric development, new path in the inclusive development. स्पेस एनर्जी सेक्टर की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, nuclear reactors, they are going to be big push for the space and energy sector. And international space station की हम यहाँ बात कर रहे हैं space से related. So planetary defense to international space center, nuclear reactors important area हैं, and US led India is going to join the US led Artemis Accords for the planetary exploration. ISRO and NASA, they would mount a joint mission to International Space Station 2024 में. And NISAR एक satellite है, again that is also collaboration of ISRO and NASA. अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे इस पेज पे पूरा जीडीपी पर कैपिटा कौन सी कंट्री में कितनी है, या पूरा G20 ग्रुप के मेंबर्स की बात की जा रही है. सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट टू, अगर आपको एक जगह सारी चीजें अवेलेबल है, यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो. द डेटा दैट वी हैव इज जीडीपी पर कैपिटा, शेयर इन देयर वर्ल्ड जीडीपी कितना है, शेयर इन वर्ल्ड पॉपुलेशन कितना है इस पर्टिकुलर कंट्री का. एंड यहाँ पे यू कैन सी इम्पोर्टेंट जो एरियाज हैं वो नीचे एक सेंटेंस में मेंशन्ड है. इंडिया की बात करें तो our GDP per capita is $9,000, share in the world GDP is 3.5% and world population में 18.3%. So we have pitched ourselves as the voice of global south. Presidency will seek to bring the south's concerns forward. तो ग्लोबल साउथ के भी अगेन क्या कंसर्न्स हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं. सो सभी कंट्री, सभी मेंबर कंट्रीज G20 का यहाँ मेंशन किया गया है. लास्टली वी आर यूरोपियन यूनियन ऑल्सो. तो yesterday we saw कि आरबीआई गवर्नर ने बोला है कि जो फिनटेक कंपनीज हैं they need to go forward with the formation of सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन. तो फिनटेक कंपनीज का सेल्फ रेगुलेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे पूरे सेक्टर को वो हेल्प कर सकता है. तो जो सेल्फ रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन है एक एनजीओ है. दीज आर बेसिकली नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस दैट सेट्स एंड इन्फोर्सेस क्या रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉलो करने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. दैट वुड बी प्रमोटिंग protecting the customer, promoting ethics and equality and professionalism. तो अब रेगुलेशंस की बात करो या स्टैंडर्ड्स जो फॉलो करना इंपॉर्टेंट है या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, तो कहीं ना कहीं उनको एक तरीके से एनफोर्समेंट मिल जाता है थ्रू दीज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू दे गेट वी कैन से काइंड ऑफ लेजिटिमेसी. तो अगेन व्हेन वी talk about dispute resolution, तो mutual agreements के through it can be resolved. and इसमें again पूरे process में efficiency भी आ सकती है. and
जिस तरीके से चीजों को एडमिनिस्टर किया जाता है। So need क्या है for these SROs? So as regulator, it continue to contemplate and implement refined regulations so that जो fintech sector है वहाँ पे we can go forward in an orderly manner when talk about their development and growth. So they could play a pivotal role in the fintech industry by promoting responsible practices. हम promote कर सकते हैं through these self-regulatory organizations and maintaining ethical standards. So बहुत सारे ऐसे instances हुए हैं when we saw कि fintech players they were involved in unethical practices like charging exorbitant higher interest rate या harassment of the borrowers for the recovery of loans. So ये सारे instances देखने के बाद again RBI came to the conclusion कि it's important they formulate these self-regulatory organizations. So market integrity, conduct, data privacy, cyber security, risk management, इन सब areas में SROs बहुत important role play कर सकते हैं. So that's all for the day. Thank you so much for joining us. And आज के न्यूज़पेपर में बहुत सारे important topics थे, like we covered them yesterday. So specifically G20 के around ही चीजें सारी revolve कर रही है. हमारे लिए keywords, key phrases note down करना important है. And yeah, do subscribe to the channel and stay tuned for further videos on daily basis.